Finally, SEBI Grade A short notification is out and the detailed notification will be out by 30th of October 2025. Now, if you're waiting for the detailed notification to come out, you want to know when the phase 1 is going to be conducted and then you are planning to start your preparation, then I would say it is going to be very late. Because in case of SEBI Grade A examination, like all the other regulatory bodies exam, we have extensive syllabus to cover which requires much more time. And I would say you are lucky enough that SEBI has given pre-intimation and these 15-20 days which you have got extra before the detailed notification is out, you should utilize it in the right format. So don't wait for the final notification to be out. You can expect the examination to be conducted somewhat around 15th or 20th of December, earliest possible. And keeping that in mind, you should target your preparation to complete the entire syllabus by next 2 months. तो उसी को कवर करना है इसी सारे सिलेबस को, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली सिडबी ग्रेड ए के लिए क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने होंगे और उनके लिए क्या relevant sources which we must follow in order to clear this examination. So let's get started. I hope you all are very well aware that phase 1 comprises of 2 papers, paper 1 and paper 2. Paper 1 is for all stream common, quant, reasoning, English as well as general awareness, which includes current affairs as well, especially the finance current affairs. And secondly, we have paper 2, which includes commerce, accountancy, management, finance, costing, company law as well as economics. बेस्ट पार्ट सेबी एग्जामिनेशन की ये है कि जो फेज 1 का पेपर 2 है द सेम इज पेपर 2 ऑफ फेज 2 एज वेल. दैट मीन्स अगर आप फेज 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर फेज 1, तो इस केस में आपकी जो प्रिपरेशन है दैट इज गोइंग टू बी सेम फॉर पेपर 2. और पेपर 1 की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली इन केस ऑफ फेज 1 इट इज एज सिमिलर एज दैट ऑफ योर RBI grade B एग्जामिनेशन. अगर आप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पैटर्न, आई एम टॉकिंग अबाउट द topics from which the questions are going to be asked. So if you are already preparing for RBI grade B, which means your phase 1 paper 1 is already sorted, your phase 2 paper 1 is also already sorted. क्योंकि अगर आप phase 2 का paper 1 देखेंगे, that is English descriptive, which you are working really very hard for RBI grade B and even for the other bank exams. अब बात आती है कि सर पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं. उसमें भी अगर आप देखेंगे फाइनेंस एज वेल एज मैनेजमेंट, ये 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपने ऑलरेडी RBI ग्रेड बी के लिए कवर किए. इन केस ऑफ इकोनॉमिक्स यू हैव ऑलरेडी कवर्ड द मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट. हाँ, ऑब्वियसली इन सेबी वी हैव माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल, तो वो एक आपके लिए एक्स्ट्रा एरिया बन जाएगा विच यू हैव टू कवर. तो उस केस में अगर हम देखें तो कंपनीज एक्ट, कॉस्टिंग, accountancy and commerce, these are the 4 areas which you need to cover in order to clear this examination if you are already preparing for RBI grade B exam. और अगर आप अभी कोई भी regulatory bodies के लिए prepare नहीं कर रहे, still trust me guys, you can manage in next 2 months to clear the phase 1 examination. क्योंकि phase 1 examination में paper 2 के जो questions हैं काफ़ी, I'll not say easy, but उनका लेवल काफ़ी कम है इन comparison to phase 2. और phase 2 के लिए अगर हम देखें तो टेक्निकली 3 महीने हैं, तो 60 दिन हम पेपर 2 प्रिपेयर कर रहे होंगे एंड नेक्स्ट 30 days अगेन वी विल बी प्रिपेयरिंग फॉर पेपर 2 सो दैट वी कैन रीच टू द लेवल विच इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन फेज 2. और फेज 1 का लेवल यू कैन रीच इन नेक्स्ट 60 days फॉर श्योर. अब किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके सिलेबस के बारे में जानना. और अगर हम इस सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 ऑफ फेज 1 कंप्राइजेज ऑफ 4 टॉपिक्स: जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग. अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूँ तो इंग्लिश के केस में वी हैव द stereotypes syllabus, that is reading comprehension से questions पूछे जाएंगे. There will be a question on close test, parajumble, phrase usage replacement, error detection, word swap, match the sentences, sentences rearrangement and fill in the blanks. So these are the questions which are going to be asked for English. अब आप चाहे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, IBPS PO, SBI PO या फिर RBI grade B के लिए, for all the exams English syllabus as well as the pattern is almost the same. Same goes for quantitative aptitude as well as reasoning, क्योंकि quantitative aptitude में भी you have number system, simplification, approximation, then you have number series, quadratic equation, percentage, ratio and proportion, average, problems on ages, probability, mixture and allegation, profit and loss, simple and compound interest, time and work, time, speed, time, distance, DI and mensuration. अब आप सोच रहे होंगे सर इतना सिलेबस 60 दिन में करना कैसे है, वो भी बता दो. तो बता देता हूँ. इंग्लिश के केस में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट स्टार्ट डायरेक्टली विद द प्रैक्टिस.
बस आपको जो पढ़ना है दैट इज ग्रामर रूल्स, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस pretty well. Secondly, in case of quantitative aptitude, you have to cover DI, number series, quadratic equation, as well as simplification and approximation, जिसका चांसेस कम है, लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ से आए तो you will be in a position to answer it. इसके बाद अगला जो टॉपिक है दैट इज रीजनिंग. इन केस ऑफ रीजनिंग अगेन सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू चूज सेटिंग अरेंजमेंट एंड पजल. एक सेगमेंट ये है. दूसरा सेगमेंट है रेस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स लाइक साइलॉगिज्म, वी हैव ब्लड रिलेशन, वी हैव इनइक्वालिटीज, वी हैव डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, व्हाट नॉट. तो उस केस में मेरा सजेशन ये रहेगा रीजनिंग के केस में कि व्हाट यू डू इज जो आपका सेटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स है उसे आप होल्ड कर लीजिए. पहले एक महीना जो आप प्रिपरेशन करेंगे, गो विद दी जनरल टॉपिक्स लाइक कोडिंग, इनपुट आउटपुट, इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, साइलॉगिज्म, डेटा सफिशिएंसी. व्हेन यू आर डन विद देम, देन कम बैक टू सेटिंग अरेंजमेंट एंड पजल. दैट विल बी अ ग्रेट मूव टू प्रिपेयर फॉर रीजनिंग. अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ चीज है दैट इज योर जनरल अवेयरनेस. जनरल अवेयरनेस में मेजॉरिटी क्वेश्चंस ऑब्वियसली करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, और करंट अफेयर्स में भी जो मेजॉरिटी क्वेश्चंस है दे विल बी आस्क्ड फ्रॉम फाइनेंस segment. We call it as financial awareness, जहाँ पे questions static conceptual भी पूछे जा सकते हैं, that will be derived from current affairs, और direct financial current affairs can be asked, जिसमें सेबी के अपडेट, सेबी के सर्कुलर, सेबी की नोटिफिकेशंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है. यू हैव टू कवर दैट. अलॉन्ग विद दैट यू हैव द जनरल करंट अफेयर्स लाइक नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, एनुअल सर्विस एंड बजट, अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, कंट्रीज एंड कैपिटल. मैं कहूँगा इसे आप इग्नोर कर सकते हैं because these days static GK and these areas are not being asked in the examination, but let's see 18th October को RBI क्या पूछता है. We will get more clarity on the same. Last but not the least is international and national organization based news will be asked. तो अगर मैं इसे कंपेयर करूं RBI के फेज 1 के साथ, तो डिट्टो है, एक एक पॉइंट सेम है. हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो ESI रिलेटेड सेगमेंट्स हैं जैसे कि स्कीम्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे वेटेज कम है, बट फाइनेंस, करंट अफेयर्स एंड जनरल करंट अफेयर्स इज स्टिल इंटैक्ट इन केस ऑफ सेबी. अब बात करते हैं फेज 2 पेपर 1 की. तो फेज 2 का जो पेपर 1 है इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, उसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एक है प्रेसी राइटिंग, दूसरा एसे राइटिंग, और तीसरा होगा आपका कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन. अब इसके लिए कौन से टॉपिक्स कहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे दैट कैन नॉट बी फिक्स, बट यस, सेबी रिलेटेड या आरबीआई रिलेटेड जब आप एग्जामिनेशन में जाते हैं तो फाइनेंशियल वर्ल्ड से ही टॉपिक्स को पिक किया जाता है, स्पेशली फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज वेल एज फॉर प्रेसी राइटिंग. ऐसे कैन बी जनरल एज वेल एज इट कैन बी फाइनेंशियल वर्ल्ड स्पेसिफिक एज वेल. अब आपके पास इतना टाइम तो नहीं बचा दैट यू कैन गो विद द न्यूज़पेपर, बट वॉट एवर यू विल बी रीडिंग इन योर करंट अफेयर्स दैट विल इंप्रूव योर फाइनेंशियल वर्ल्ड नॉलेज एंड दैट कैन हेल्प यू टू राइट अ गुड essay in the examination. अब अगर हम बात करें, वैसे तो 7 डिफरेंट सेक्शंस है, लेकिन मैंने इनको 6 बना दिया. आई हैव कंबाइंड कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, देन वी हैव मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट एज वेल एज इकोनॉमिक्स. अगर मैं इनके सिलेबस की बात करूं तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है उसमें अकाउंटिंग एज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स with specific reference to accounting for depreciation, inventories, revenue recognition, fixed assets, foreign exchange transactions, as well as investments. Then we have the statements. We talk about the financial statements such as cash flow statement, balance sheet, profit and loss statement, and unka analysis. You must cover that. Then you must know the ratio analysis, जिसमें turnover ratio, profitability ratio, solvency ratio, इनका analysis बहुत important है. Then we have accounting for share capital transactions, which include accounting for bonus shares, right issues or right shares. Then we have employee stock option, buyback of securities, how it is done, how its accountancy is maintained. Then preparation and presentation of company's final accounts. This is something which you need to cover with respect to commerce and accountancy. Management की बात करें तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है. It is as same as that of RBI Grade B syllabus, which include the general management topics. Then we have human resource development. Then we have motivation, morale, incentives, communication. As you can see, word by word, the entire syllabus is same. Next, we have the finance syllabus. Again, finance syllabus is almost the replica of RBI Grade B. Financial system, that is the role and functions of regulatory bodies in financial sector. तो जो हम RBI, bank related in depth पढ़ा है हमने for RBI, that is not required. यहाँ पे overview of all the financial
regulatory bodies is important. Then in detail coverage of financial market is need to be done, where you must understand forex market, money market, bond market, equity market functions, instruments like equity shares, preference shares, most importantly derivatives, as well as the recent developments which have been done, which are none other than the SEBI notifications, SEBI master directions, SEBI circulars, or other updates with respect to the financial market of the country, because SEBI is the regulator of capital market. We all know that. Then we have general topics like derivatives, recent developments in the financial sector, financial inclusion, alternate source of finance, private and social cost benefit, private public partnership. Then we have direct indirect taxes, non-tax sources of revenue, GST, finance commission, fiscal policy, all these topics are similar to that of your RBI grade B finance syllabus. Then the most important part जहाँ पे थोड़ा आपको टफ लगेगी चीजें, that is costing. In case of costing, you must have the overview of cost and management accounting, introduction to cost and management, objective and scope, methods of costing, which include single output or unit costing. Then we have job costing, batch costing, contract costing, process and operation costing. Then we have costing of service sector, basics of cost control analysis, which includes standard costing, marginal costing, as well as budget and budgetary control. अगर आपको लग रहा हो कि सर क्या बोल रहे हो, तो don't worry. These are topics which are, I believe that if you give your 100% for next 60 days, you will be in a position to clear it. Then we have lean system and innovation, introduction to lean system, just in time. Then we have Kaizen costing, 5S. Then we have total productive maintenance, Six Sigma, and many more areas which you need to cover. Lastly, we have the Companies Act, where Companies Act 2013, specific reference to chapter 3, 4, 7, 9, 11, as well as 12, and along with that 27. These are the chapters from the company law which you need to cover. Last is your economic syllabus, which include micro topics, demand and supply, market structure. Then we have the macro topics like national income, then classical and Keynesian approach, determination of output and employment, consumption function, investment function, multiplier, accelerator, demand and supply. These all are the microeconomics topics जो आपको नए नए लग रहे हैं कि पहले कभी नहीं सुना. That is the part of microeconomics. Foreign exchange market already done, inflation you have already done, monetary policy, fiscal policy done, NBFCs you have done. बस एक balance of payment वाला जो टॉपिक है, that has also been covered in your RBI grade B preparation. तो मोटा मोटा अगर हम कंक्लूड करें, तो कंक्लूजन ये कहता है कि सर अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हैं, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग, कंपनी लॉ, ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ना इन डिटेल बहुत जरूरी है, जिसकी मदद से आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने में कामयाब हो सकते हैं. और उसके लिए आपको फॉलो करने होंगे कुछ वीडियो लेक्चर्स या कुछ लाइव लेक्चर्स, बिकॉज ये जो टॉपिक्स हैं, दीज आर कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स, स्पेशली कॉस्टिंग. कंपनी लॉ तो आप पढ़कर भी समझ सकते हैं, लेकिन कॉस्टिंग के लिए यू नीड अ मेंटर, सो दैट मेंटर कैन गाइड यू प्रीटी वेल in order to understand the topics related to the costing aspect. ठीक. Last but not the least is the moment you clear phase 2, you will be sitting for the interview. There is obviously no official syllabus for interview. It's a personality check where your communication skills, awareness about the world, awareness about the organization, your understanding about the day-to-day operations, your education, work experience is going to be checked. So interview is not a big deal. Big deal is phase 1 and phase 2. But once you will clear your phase 2, you can go with a number of mock interviews to master your interview phase, and trust me, it's doable. But the question is कि सिर्फ phase 1 और phase 2 का सिलेबस अच्छा खासा, मान लिया कि आरबीआई से काफ़ी कॉमन है, लेकिन जो 3-4 टॉपिक्स आपने बताए या सब्जेक्ट्स आपने बताया कि डिफरेंट है, उसके लिए क्या करें? उसके लिए ऑन आवर टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म वी हैव लॉन्च सेबी ग्रेड ए कोर्स. सो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड द मोमेंट यू विल ज्वाइन दिस पर्टिकुलर कोर्स, you can get that confidence, you can get that trust that yes, you can clear this examination in the very first attempt itself. अब अगर आपको चाहिए ये कोर्स मिनिमम प्राइस पे, use the code MADHAV in order to have maximum discount, and obviously Diwali sale is going on. This is the right time to purchase the course and start your preparation right away. So thank you so much for your time, guys. I hope this video helps you in order to understand the syllabus
and understand the intensity of the examination and start your preparation right away without waiting for the detailed notification. Thank you so much. Good luck. God bless you all.